the optics, though we have started yesterday. हमने कल कुछ questions कर लिए थे. Just a second, because we are going live also on the other platform. Just a second, students. Yeah, done. Yeah, please do leave it here. Yeah, thank you. So, on the behalf of Chandigarh Defence Academy, welcome to the class of Physics for NDA. And today we are going to talk about optics, one of the most important topics for NDA, or be it any paper in which physics is there. So as I was talking to the other students also, हमने optics के कल कुछ questions कर लिए थे, 3-4 किए थे, तो फटाफट उनको go through करते हैं and then we will move forward. So we shall start. The principle of working of periscope is based on, the answer is reflection. Okay. वो कल हमने periscope बनाया था and the answer for this question is reflection. Periscope आपको help करता है ऊपर या नीचे देखने को, if there is some barrier in front of you. If there is some barrier in front of you. A option. Fantastic. So let's clear it out. now जी next question करें. If a concave mirror of focal length 10 cm is immersed in water, its focal length will. Well, mirror's focal length does not depend upon the medium in which they are immersed. तो उसकी focal length change नहीं होगा. That phenomena is only preserved for lenses. So based on this, answer इसका बनेगा, it remains unchanged. So ये भी कल हो गया था हमारा. Just for the other audience, I am revising it. So this is the option C. चलो जी आगे आइए. If I go to the next question, the sun is visible to us. The sun is visible to us a little before the actual sunrise and little after the actual sunset. The answer is due to the refraction of the light. Due to the refraction of the light, we do get some virtual images of the sun. So इसका आंसर क्या हो गया? Refraction. Answer is A. So let's move to the next one. जो हमें देख रहे हैं और प्लेटफॉर्म पे भी मैं उनको बता दूं that these are all the questions that have been taken from previous year question papers of NDA for the of course subject of physics. चलो जी. The boundaries of a block of transparent material are found to be completely invisible when placed in a liquid of refractive index mu. This is possible only if the refractive index of the material of the block is. It is like let us say I have one fluid. Just imagine. And let us say refractive index of the fluid is mu. If I keep a block in it, एक block place कर दे, और मैं block का refractive index भी mu कर दूं, if I make the refractive index of the block same, it is only under this condition when the object will disappear. It will be just like you would say about Mr. India. Huh? मीडियम में उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप डाल दो, आपको दिखेगा नहीं, एटलीस्ट इन दैट मीडियम इट विल नॉट बी विजिबल, क्योंकि वो फिर मीडियम का ही पार्ट है. तो आंसर आ जाएगा इक्वल टू म्यू. आई बात समझ में? रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो आपको ट्रांसपेरेंट ही लगेगा वो. फैंटास्टिक. आंसर इज चॉइस बी. वेरी गुड सोमनप्रीत. सो लेट्स कीप ऑन मूविंग टू द अदर क्वेश्चंस. कैडेट्स, please do keep record of these answers with you. चलो जी. One of the very popular questions. The blue color of the sky can be attributed to. Sky हमें blue color का क्यों दिखाई देता है? Answer is scattering of the light. Now which choice is giving you the scattering of the light? Answer is choice A. It's a differential scattering of sunlight by the atmosphere. Fantastic. Answer is choice A. और अगर और थोड़ा डिटेल में पूछ लें, कौन सी स्कैटरिंग है? रेले स्कैटरिंग. कौन सी स्कैटरिंग? रेले स्कैटरिंग, which is responsible for the appearance of blue color of the sky. I hope it is clear. Fantastic. Good. So let's go to the next question. Okay, question is, if a man approaches a plane mirror at the rate of 2 km per hour, then his image would approach him at the rate of. It is a plane mirror. Draw the principal axis. There is one person here. It is approaching at the velocity of v. जो उसका वर्चुअल इमेज है, कौन सा इमेज है? वर्चुअल इमेज. वो भी v से ही अप्रोच करेगा. Wait.
बिल्कुल वो भी V से अप्रोच करेगा, बट वो V से अप्रोच करेगा मिरर को. Image will approach the mirror, but here he is asking his image would approach him. Okay. उसको किस velocity से approach करेगा? Now using the concept of relative velocity will add up. Answer will be 4 kilometers per hour. देखो बहुत ध्यान से बोलना है इसका आंसर. अगर तो पूछा होता his image would approach the mirror, then it would be still 2 kilometers per hour. Yeah, but he is asking. Yeah, that is what I am repeating. Question में क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है image किसको अप्रोच करेगी, उसको, him. So he is moving with 2 kilometer per hour. Image is also approaching at the rate of 2 kilometer per hour, but that is with respect to the mirror. अब ये image कैसे approach कर रही है to the person? 2 plus 2, that will be 4 kilometer per hour. The concept of relative velocity clear हो गया? पूछा है उसके रिस्पेक्ट में, पूछा है उसके रिस्पेक्ट में. चलो, so this is done. Next आइए. Okay, I think we have to select the right diagram. आजा देखें. Which one of the following diagrams correctly illustrates the refraction of normal incident ray of light passing through a glass slab? If the ray of light is normal, there is no refraction. Light simply passes through it. Angle of incidence क्या हो गया? 0. Angle of refraction भी क्या हो जाएगा? 0. ठीक है? So based on that, the answer to this question would be choice D. Incident ray of light does not get refracts. हाँ, reflection हो सकता है, but फिर question किस चीज का है? Question है refraction का, refraction का. ठीक है जी? याद रखिएगा. So based on this, let's go to the next question. Let me just clear this out. Okay, it's all good. चलो next चलते हैं. Which one of the following is the correct arrangement in the decreasing order of the refractive indices? Refractive index का कौन सा order देना है? Decreasing order. Diamond is the highest. कुछ values note करना चाहते कर लो. Diamond का refractive index होता है 2.5. Then it will be glass, and then it will be water. Diamond refractive index is approximately 2.5. Glass is approximately 1.5. Water refractive index is approximately 1.33. ठीक है? So based on this logic, answer to this question would be choice D. Okay, remember this. So let's proceed to the next question. When light passes from air into glass, glass is an optically denser medium than the air. याद रखिएगा. It experiences change of. और थोड़ा सा मैं एक डायग्राम बना दूँ इस चीज समझाने के लिए. Let us say this is air. Air का refractive index हो गया 1. Let us say this is glass. Glass का refractive index हो गया n2. Let me say it has some value. When the ray of light passes from air to glass, this is air, it is passing to glass. Denser to rarer, or rarer to denser? Rarer to denser, towards the normal. Few angles will be formed, theta 1, theta 2. Theta 2 is less than theta 1. This is how the refraction of the light takes place. Rarer to denser, air to glass, bends towards the normal. ये हम सीखते हैं. अब थीटा 2 अगर लेस है तो स्नेल्स लॉ से वेवलेंथ भी चेंज होगा, वेवलेंथ भी कम हो जाएगा. आपको ये फॉर्मूला याद होगा. साइन थीटा 2 और लिखो बाय साइन थीटा 1 is equal to lambda 2 by lambda 1. So yes, wavelength of the light changes. And wavelength is getting in fact reduced. Wavelength is getting reduced. Speed also changes. Speed also changes. Denser is the medium, lesser is the speed.
So this can also be written as V2 by V1. Frequency never changes. Frequency never changes. Frequency is the fundamental property of the radiation, electromagnetic property. Frequency source का कभी change नहीं होता, याद रखिएगा. So based on this answer, lambda change होगा, velocity भी change होगा. तो answer बनेगा wavelength and speed. It experiences change of wavelength and speed. Frequency will never change. तो बाकी तीन choices में frequency, frequency, frequency है, वो part नहीं हो सकता इसका. Important question है. Important question है. और हालांकि we are doing ray optics, same is true for the sound. When sound changes, or sorry, when sound passes from one medium to other, sound की बात कर रहा हूँ, उसकी भी frequency change नहीं होती. So frequency of the any wave never changes whenever the medium is changed. Clear? So, let's proceed to the next one. I think it's a repetition. I'm sorry for that. I think we have repeated. Decreasing order. It is diamond, glass, and water. ठीक है. Answer इसका हो जाएगा choice A. The correct sequence of the decreasing order of the velocity. Oh, it is about the velocity. I thought it is the repeated question. I'm really sorry for that. Okay, it is about the velocity. It is about the velocity. Okay. Now remember this concept. Refractive index is kind of inversely proportional to the velocity of the light, because by definition refractive index is the ratio of C by V, where C is the velocity of light in vacuum. तो बात बड़ी सीधी सी है, जितना ज़्यादा refractive index उतनी कम velocity. So he is asking the correct sequence of the decreasing order, यानी कि सबसे ज़्यादा velocity किसका? सबसे ज़्यादा velocity उसका जिसका सबसे कम refractive index, having the minimum value of the refractive index. Which is having the minimum value of the refractive index? Water glass. उल्टा हो गया इसमें. Diamond will have the minimum velocity because refractive index of the diamond is maximum. I hope I have answered this question. Okay, I thought it has just repeated, but no, this time he was asking about the velocity of the light. So fantastic. Khushi and others are understanding. Soman is also there. The students are also there in our online platform. Chalo, God bless you all. Chalo आगे चले. So let's go to the next question. This question is about the relative refractive index. I'll solve करें. Simple सा है, don't worry. If the refractive index of water and that of glass with respect to air are, okay, ये तो डाटा दे दिया उसने. Water का दिया है जैसे हमने बोला था 1.33, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ. अच्छा. Refractive index of water with respect to air. This is what he is giving us. Air का refractive index with respect to vacuum is approximately 1. We can take it as 1. Now NW, W for water, A for air, that is given as 4 by 3. That comes out to be 1.33 जो हमारे पास है. And that of glass का था 1.5. So refractive index of glass with respect to refractive index of air is given as 3 by 2. ये data है. This is the data that is given to us. Okay, now he is asking refractive index of glass with respect to water. He is asking Ng divided by Nw. ये पूछ रहा है वो. He is asking Ng by Nw. So I think you have to divide 3 by 2 by 4 by 3. So ये Ng आएगा ऊपर 3 by 2, इसको divide करो. Na cancel हो जाएगा. So 3 by 2 divided by 4 by 3, that will be 3 by 4. It will be 9 by 8. Now 8 ones are 8, 10, 8 ones are 8, 20, 8 twos are 16, 40, 8 fives are 40. Answer is coming out to be 1.125. C. शाबाश, शाबाश. जिन्होंने आंसर दिया है C, बहुत बढ़िया. ये relative refractive index का concept, it should be crystal clear. और एक और बात सुन लो. Whenever we say refractive index of some medium is, let us say 1.5, बोल दिया. बहुत जगह लिखा भी होता है. क्वेश्चन में भी दिया होता है. Refractive index of some material is 1.5. In particular glass की बात होगी. It is always with respect to vacuum. Because refractive index of vacuum is 1.
ठीक है, तो हम बार बार बोलते नहीं है कि बार बार विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम बोले, मीनिंग यही है स्टेटमेंट का. So it is always with respect to vacuum whenever we define the refractive index. Clear? चलिए. And हाँ एक और चीज, ओके आपने बोला बहुत अच्छा लगा. एक और चीज, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 होता है. Exactly it is little bit more than 1, 1.00 something, 1 something. But for calculation purposes then we can assume that air is having the refractive index of 1. It helps our calculations. ठीक है, चलिए. So important question था ये, relative refractive index का आना चाहिए. One should be crystal clear about this also. जी next है statement question है, आप पढ़ें. When a ray of light is reflected under multiple reflections by a set of plane parallel mirrors, अगर light reflect होती रहती है plane parallel mirrors के साथ, then the intensity of the ray diminishes due to. Answer is absorption. Light कल भी बताया था जो हमारे स्टूडेंट्स कल आए थे. At every reflection there will be some interaction with the molecules of the surface and there will be some absorption of the light which leads to the loss in intensity of the light. तो absorption तो दो जगह है, एटमॉस्फेयर की तो बात यहाँ नहीं होएगी, मिरर से ही हो रहा है जो भी हो रहा है. हाँ स्कैटरिंग भी होती है थोड़ी सी, तो उससे भी लाइट का लॉस होता है, बट मेन रीजन इज एब्जॉर्प्शन. सी कैनॉट बी द आंसर. वो कह रहा है absorption of light by the atmosphere. Atmosphere is not absorbing the light. It is the mirrors which are absorbing the light. There is some loss of light taking place at the surface. Yeah, good. So I hope the answer is clear. ठीक है, nice question. So let's proceed to the next one. One of the more popular questions, सदियों से चलता आ रहा है क्वेश्चन, बहुत बार बहुत जगह पे आया है. और क्वेश्चन पढ़े. If half of the body of lens is converted with black paper, I think it is covered with the black paper or something like that, then the image produced by the lens will be. Black paper, अगर मैं लेंस के ऊपर black paper लगा दूं, ऐसा कोई एक लेंस है, मान लो convex lens लिया, I covered it half of the black paper. इमेज के ऊपर ब्लैक स्पॉट ऐसा कुछ नहीं आएगा. ब्लैक पेपर जो तुमने लगाया, इट इज जस्ट रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. वो ब्राइटनेस उसकी कम हो जाएगी इमेज की. इमेज अभी भी वैसे ही बनेगी जैसे बन रही थी. सो साइज कम नहीं होने वाला, डिसअपियर बिल्कुल नहीं होने वाला, इंटेंसिटी उसकी हाफ हो जाएगी क्योंकि आप लाइट को पास होने के लिए आपने काफी हाफ कर दिया उसका एरिया. तो आंसर विल बी सी, हैव इट्स इंटेंसिटी रिड्यूस्ड टू हाफ. ओके, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज विल रिमेन सेम. अगर इन्वर्टेड रियल जो भी बनना था अकॉर्डिंग टू द सेटअप, अभी भी वही बनेगा. क्लियर? डन? ग्रेट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. A beam of monochromatic means single wavelength radiation. A single wavelength radiation is passing from one medium to another. Which one of the following quantities never change or does not change? अभी बोला है, अभी समझाया है. Frequency, yes, it is a frequency. It's a fundamental property. It never changes. बाकी सब चेंज हो जाएगा. इंटेंसिटी का लॉस होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा. आंसर इज चॉइस डी, डी फॉर दिल्ली. क्लियर है जी? बहुत बढ़िया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. An astronaut in the space will observe sky as. Okay, हमें तो यहाँ से स्काई ब्लू दिखता है. एनडीए बस सारे क्वेश्चन ही एनडीए वाले, सारे क्वेश्चन एनडीए वाले हैं. कुछ क्वेश्चन हम बोल देते हैं एनडीए में पेपर में आया हुआ है. कौन सा कलर दिखेगा एस्ट्रोनॉट को? ब्लैक. ट्रू. There is no scattering of the, there is no atmosphere. And if there is no atmosphere, there are no atmospheric gases, there will not be any scattering of the light. Sky will not appear blue, sky will appear as black. मूवीज में भी देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे भी देखा होगा, स्पेस में जाते ही स्काई किस कलर का हो जाता है? ब्लैक कलर का. ऑफ कोर्स स्टार्स होंगे, तारे तो दिखेंगे, स्काई की बात हो रही है. तारे तो दिखेंगे. ठीक है, चलिए.
go to the next one. Okay, let us try to answer this question. This question has been asked in different ways sometimes. वो कहता है रिफ्रैक्शन क्यों हो रही है, ये पूछ रहा है. When ray of light gets refracted while passing from air to glass, reason पूछ रहा है. Because the reason is change in the density of the medium. The reason is change in the density of the medium. अब कई बार ये चॉइस A and I think choice D could be confusing because speed is also getting changed. But actually in glass speed will be less. ग्लास में तो स्पीड कम हो जाएगी ना. सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की कहाँ पे है, वैक्यूम में. तो ये आंसर ये नहीं है, डी नहीं है. बाकी कुछ हो नहीं सकता. एक ही चीज बचती है, डेंसिटी ऑफ ग्लास. एंड आई होप हियर ही इज मीनिंग दैट डेंसिटी इज द ऑप्टिकल डेंसिटी. दैट इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू. एंड ग्लास इज डेंसर देन द एयर. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है. घूम फिर के बात वही है. आंसर इज चॉइस ए. So ray of light gets reflected while passing from air to glass because density of glass, optical density I think is referring to, is higher than that of the air. ठीक है जी. एक मेरी और रिक्वेस्ट है आपसे, एनडीए बहुत पास आ गया. क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो. कभी ये मत सोचना कि किया कराया आ गया. किया कराया आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट दे आर वेरी स्मार्ट. दे विल ट्वीक द क्वेश्चन. एग्जाम्पल, समटाइम्स दे विल से चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. पढ़ लो, बहुत गलतियां होती हैं इसमें. क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. तुमने पढ़ लिया पहला स्टेटमेंट वो सही है, तुम आंसर लिख के आ गए. अरे उसने पूछा था व्हाट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, योर आंसर इज रॉन्ग. क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लो, ठीक है. डोंट गेट टू एक्साइटेड. अरे कराया आ गया, अरे आंसर आता है इसका. आराम से पढ़ो, इतना टाइम होता है, हो जाता है. ठीक है. So please do make a conscious effort of reading the questions properly. चलो जी नेक्स्ट चलिए. Question number 17. Twinkle twinkle little star. So why do the stars twinkle at night? Answer is the atmospheric refraction. Again refraction. See, you are watching star from here. आप थोड़ा सा देखो. मान लो आप यहाँ पे खड़े हो on the planet Earth and there is one star which you are watching. वहाँ से light सीधी नहीं आ रही है. There are different layers of the atmosphere. There are different densities of layer and moreover atmosphere हवा चल रही है. So due to that lights keep on refracting. You know, it keeps on refracting and then it reaches you. So it appears to be a twinkling effect. एक ट्विंकलिंग इफेक्ट आता है. एंड सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सम अदर वे इन सम एग्जाम कि अगर स्पेस से स्टार को देखोगे, इफ यू आर इन स्पेस, विल देयर बी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? नो, इट विल जस्ट बी एज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट. दैट्स इट. व्हाट इज द आंसर? रिफ्रैक्शन. हम कभी-कभी हंसते हैं, 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन का आंसर तो रिफ्रैक्शन ही होता है. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? हर बार आंसर क्या आता है? ऐसे अजीब से जो क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली इसका आंसर रिफ्रैक्शन ही है. ठीक है. तो थोड़ा कई बार तुक्का अगर मारना हो तो देखो, तुक्का पूरा कभी मत मारना. जब आप दो चॉइसेस में कंफ्यूज हो तो मार दो. तो आई सजेस्ट गो हेड. ओके, बट डोंट मेक अ वाइल्ड गेस आउट ऑफ 4 चॉइसेस. 50-50 इज ओके. चलिए, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. सन और स्काई अपीयर्स रेड, ऐसा क्वेश्चन भी आया है ड्यूरिंग द सनसेट. ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा चुका है. ट्रैफिक लाइट जो स्टॉप सिग्नल है और डेंजर साइंस है, ये सब पे रेड कलर लगाया जाता है. व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? वी हैव स्टडीड इन +2. व्हाट इज द रीजन? एनीबडी कैन आंसर दिस फ्रॉम द ऑडियंस व्हिच इज लाइव हियर. ABCD? नहीं, आंसर है इसका ए. रेड कलर अंडरगोज द लीस्ट स्कैटरिंग. आंसर इज रेड कलर अंडरगोज द लीस्ट स्कैटरिंग. एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेले स्कैटरिंग. तो आप सिर्फ स्कैटरिंग ही याद रखो. रेले एक साइंटिस्ट का नाम था.
It is inversely proportional to lambda raised to power 4. So if lambda is more, scattering is less. If lambda is more, scattering is less. Red color is having the maximum wavelength. क्यों? हमारा विबग्योर in the increasing order of wavelength. Which color is having the maximum wavelength? Red. So due to that scattering is minimum. अब ये scattering red कैसे बना रही है? Scattering red कैसे बना रही है? Scattering कम हो रही है. Scattering कम हो रही है तो imagine you are standing somewhere here. Watch this. You are standing someone here. There is one red source of light. So that light is able to reach you. अगर स्कैटरिंग हो गई लाइट तो इधर उधर हो जाएगी तो कहीं पहुंच नहीं पाएगी वो. आई बात समझ में? सो रेड कलर is able to reach the observer due to which phenomena least scattering. It is the red color which scatters the least, and due to that sun appears or sky appears और वार्निंग साइंस और ट्रैफिक लाइट्स स्टॉप सिग्नल. ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के आता रहता है. रेड इज द कलर दैट इज यूज्ड बिकॉज रेड कलर अंडरगोज द लीस्ट स्कैटरिंग. इंटेंसिटी होता है कितना ब्राइट है लाइट, कितनी ब्राइट है. ओके. एंड टेक्निकली कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है मेरे से, सर इंटेंसिटी बता दो. इंटेंसिटी इतना याद रखिए, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल. ये याद रखिएगा. एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है वो एक तरह से आपको इंटेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. ए स्क्वायर वो बनाते हैं ना साइन वेव. एम्पलीट्यूड कितना ऊपर नीचे जा रही है, दैट इज अबाउट द इंटेंसिटी. ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा. हाँ, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? रेड कलर अंडरगोज द लीस्ट स्कैटरिंग. Fantastic, it's clear. हमें पूरा समझना है इसको. Few days back I did the electrostatics, I did the current and electricity, very important concept topic about the NDA. In NDA optics we have to do it. मैं आराम से करवा रहा हूँ, मैं भगा नहीं चाहता इसमें कुछ भी. समझ में आना चाहिए तो वहाँ पे आंसर कर पाओगे. चलो, let's proceed to the next question. It's a general knowledge question. The wavelength of the light of the violet color is violet. विबग्योर आप थोड़ा information ले लें. Our visible spectrum is of the order of विबग्योर. And when we move from violet to the red, wavelength increases. ऐसे याद रखो बस. ठीक है. और जो विबग्योर स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसका जो वेवलेंथ का रेंज होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 400 टू सम पीपल से 700, आई से 750 नैनोमीटर. सी ऐसा कोई बॉर्डर लाइन नहीं है. रेड है, इंफ्रारेड है, वो चलता रहता है. और स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए स्टूडेंट्स. आपको आएंगे क्वेश्चंस इसके ऊपर. फिलहाल ये वायलेट कलर की अगर मैं स्पेक्ट्रम बताऊं, वायलेट कलर का वेवलेंथ हो गया 400 नैनोमीटर, दैट इज 0.4 माइक्रोमीटर. बी 1 नैनोमीटर में 10⁻³ माइक्रोमीटर. तो मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 0.4 माइक्रोमीटर. हाँ, 1000. ठीक है जी, तो एक पॉइंट पीछे चला जाएगा. यहीं पे मैं स्पेक्ट्रम इंट्रोड्यूस करवा दूं. वो ऑर्डर का क्वेश्चन आता है एनडीए में, क्योंकि बात उठी है तो लेट्स कंप्लीट इट. लेट्स टॉक अबाउट आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. लिख लो. We are putting it in the increasing order of the wavelength. We start from gamma rays. सबसे कम wavelength है इनका. Then we have X-rays. X-rays के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं एनडीए में, बहुत बार आए हैं. Wavelength is of the order of 1 angstrom. याद रखिएगा. Please remember it. Please do remember the information that I am giving. ये आ चुकी है, बार बार पूछते रहते हैं वो. जैसे वायलेट का वेवलेंथ पूछ लिया तो रेड का किसमें चला जाएगा? 700 नैनोमीटर के आसपास. सो गामा रेज, एक्स रेज. ओके, यू आर slowly trying to enter into what? विबग्योर. विबग्योर से पहले क्या आ जाएगा? अल्ट्रा वायलेट. इट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ. अल्ट्रा वायलेट आ गया.
And here comes our visible spectrum, Wave-Gyor. इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. Arrange the you can say wavelengths in the increasing order or decreasing order. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ये बच्चे को पता है, कोई बड़ी बात नहीं है. चलो आगे चलो. रेड के बाद क्या आ गया? इंफ्रारेड. वेव-ग्योर का वेवलेंथ का रेंज है अप्रोक्सीमेटली 400 टू 700 या 750 नैनोमीटर. डाटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. डाटा इज इंपॉर्टेंट. From infrared, you enter into the range of microwaves. Microwaves. And last is the radio waves. Radio waves have wavelength of the order of few meters. ये भी याद रखिएगा. मतलब आंगस्ट्रॉम से गामा रेज की तो 1 आंगस्ट्रॉम से भी कम है वेवलेंथ. ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट डाटा है, सफिशिएंट है. एग्जैक्ट डाटा कोई नहीं याद रख सकता है, इसका आइडिया होना चाहिए. ये फ्यू नैनोमीटर्स में फॉल करता है, ये तो बहुत छोटा है 1 एंगस्ट्रॉम. ये उससे भी छोटा हो जाएगा 0.1 या 0.01 एंगस्ट्रॉम. एंड रेडियो वेव्स आर इन द रेंज ऑफ मीटर्स. So this order should be clear, and it is in the increasing order of the wavelength. That means it is in the decreasing order of frequency. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टा चलते हैं एक दूसरे से. ठीक है? I hope it remembers. We start from gigahertz, we enter into few megahertz. Radio waves are in kilohertz and megahertz. याद है रेडियो स्टेशन हमारा 93.4 मेगाहर्ट्ज FM. प्रैक्टिकली याद रखो, इजी रहता है. तो याद रखिएगा ये डाटा. तो मैंने ये बता दिया आपको. प्लीज डू रिमेंबर द ऑर्डर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. ठीक है जी, चलो. आई होप इट इज क्लियर. द ऑर्डर ऑफ द कलर इन सेकेंडरी रेनबो. सेकेंडरी रेनबो बहुत कम दिखता है. रेनबो के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, अभी आगे भी करेंगे. जो प्राइमरी रेनबो होता है वो होता है वेव-ग्योर. इसमें उल्टा है क्योंकि ये सेकेंडरी रेनबो है, तो बहुत कम लोग इसको देख पाते हैं. ठीक है? तो क्वेश्चन आया हुआ है, इन सेकेंडरी रेनबो ऑर्डर है उल्टा. वेव-ग्योर की जगह है आर पहले है, तो आर पहले है, तो रेड ऑन द इनर एज एंड वायलेट ऑन द आउटर एज. सो आंसर वुड बी चॉइस बी. जो मोस्टली हमको दिखता है वो है प्राइमरी रेनबो, तो उसमें वायलेट, इंडिगो, ग्रीन ऐसे चलता है. इसमें उल्टा चलेगा. Okay, I hope you remember it. And before I proceed to the next topic, your next question, रेनबो बनता कैसे, ये भी पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे अभी. तो फिर मैं वहाँ फिर आपको इजी रहेगा, आप थोड़ा सा देख लेंगे. लेट्स हैव एन आइडिया कि रेनबो बनता कैसे. सो यहाँ लेट्स यूज दिस ब्लैंक स्क्रीन. नोट करना कर लो. What is the basic idea behind the rainbow formation? They will be asking you, cadets, students, they will be asking you. बहुत questions आए हैं इसके ऊपर. तो बारिश होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में. बारिश होनी चाहिए मतलब एटमॉस्फेयर में there should be droplets of water. So let me say there is a droplet of water here. This is water droplet in the air. ऐसे थोड़ा दिख जाएगा, बारिश में दिखेगा. सिर्फ बारिश भी काफी नहीं है, पानी भी काफी नहीं है. Only in particular condition you will see the rainbow. सुनते रहो. Let us say this is you, this is the observer. He is standing here, and then to see the rainbow, sun should be behind him. It could be ahead him, but this is a normal condition जिसमें उसको rainbow दिखेगा. तो ये हो गया sun. Now what happens? Watch. Few rays of light enter into this water droplet. एक ray of light से समझ में आ जाएगा, don't worry. तो यहाँ पे हुई dispersion of the light, जैसे प्रिज्म करता है, याद है थोड़ा बहुत, जैसे प्रिज्म करता है. तो यहाँ पे क्या हुआ? dispersion. क्या हुआ? dispersion of light. What is dispersion of light? Splitting of light into 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. अभी आएगा क्वेश्चन, एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है. प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड इन रेनबो फॉर्मेशन इज ABCD. 3 चॉइसेस दी, 4 चॉइसेस दी हुई हैं. कौन कौन सा? डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन, ब्ला ब्ला सो ऑन.
चलो डिस्पर्शन हो गया। अब अगर ये रे ऑफ लाइट सीधा निकल गई फिर इसको कैसे दिखेगा रेनबो? अब यहां से हुई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या हुई? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी प्रिज्म का फिनोमेना कई बार देखा होगा आपने। And now it further refracts, and now the light has split into its 7 constituent colors. तो यहाँ पे फिर उसको दिख रहा है वायलेट से लेके रेड तक। दिस इज हाउ प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड। तो कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हुए? डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड ऑफ कोर्स अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो कुछ भी ना होता। So 3 processes are generally involved in the formation of rainbow. Refraction of the light, which causes the dispersion of the light. Dispersion से violet, indigo, blue, green, red बन गए आपके जो बनने थे, and then it ultimately leads to total internal reflection, again a specific condition. And when the light is able to pass back, observer sees the rainbow. और कभी-कभी आपने देखा होगा गाड़ी चलते-चलते, हाँ तो बहुत छोटा होता है, प्रिज्म भी कितना सा होता है। सोमनप्रीत ने बोला सर वाटर ड्रॉप बहुत छोटा सा होता है। सोमन, हवा में एक वाटर ड्रॉप नहीं है, करोड़ों है। थाउजेंड्स ऑफ वाटर ड्रॉप्स। समझाने के लिए आप टेकन द एग्जांपल ऑफ वन ड्रॉप। ओके, सो just from the NDA point of view, what you have to remember is refraction, dispersion, and total internal reflection, total internal reflection. 3 processes result in formation of the rainbow, and this is how the observer observes it. हाँ, बात हो रही थी कि कई बार आपने देखा होगा गाड़ी में जा रहे हो, कभी दिखता है रेनबो, फिर गायब हो जाता है, फिर दिखता है। तो दैट मींस एंगल भी मैटर करेगा, आप देख कहां से रहे हो। अगर इधर आ गए, मान लो देयर इज वन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग हियर, ये थोड़ा एनडीएस ऊपर की बात है पर सुन लो, इसको नहीं दिख रहा रेनबो क्योंकि लाइट स्प्लिट होकर इधर जा रही है। इसको दिखेगा, जिसको नहीं दिखेगा। तो where, how you are seeing it, what location is there, this is how you see the rainbow. ठीक है, I have given 5 minutes for this topic. It was important. Formation of rainbow. Clear? I hope it is clear. I hope if the question comes, you will answer it. ठीक है जी, चलो next, go to the next one. A stereoscopic camera, अभी तो ज़्यादा बातें नहीं होती. We all have HD cameras right now. मैंने बताया था खुशी सेकेंडरी रेनबो में पता क्या होगा? जो लाइट आ रही है ना, वो दोबारा घूम के तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, समझ गए? वो किसी और ड्रॉपलेट में घूम के कुछ और ऑर्डर बना देगी लाइट का, तो फिर ऑर्डर कलर्स का उल्टा हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस इन सेकेंडरी रेनबो। इन प्राइमरी रेनबो जो बताया था, लाइट गई, डिस्पर्शन हुई, वापस आ गई, इधर दिख रही है ऑब्जर्वर को, दैट इज प्राइमरी रेनबो। इन सेकेंडरी रेनबो जो लाइट आ रही है, इट फर्दर गोज इनटू द TIR and then the order is reversed. That is secondary rainbow. But again, at every refraction there will be loss in intensity of light. तो इसलिए इसकी इंटेंसिटी कम होती है हमेशा। चलो जी, ये बात हो रही थी स्टीरियोस्कोपिक कैमरा की। आजकल तो नहीं होता, पहले होता था। Movies have been you can say made in stereoscopic camera. It is giving you the appearance of 3-dimensional 3D objects। 3D movie की जब बात होती है ना, so they try to make it in the stereoscopic camera. It is not exactly 3D, it is giving you the 3D appearance. तो कभी 3D मूवी देखने जाओ तो स्टीरियोस्कोपिक कैमरा में बनती है, वो याद रखिएगा। So it gives us the stereoscopic appearance, it gives us the 3D appearance. Okay, so this is question number 21. Let's try to complete 25. Our target जो होता है हमारा 25 है रोज का। The inability of rays of different colors to converge at a single point after refraction through a convex lens is called chromatic aberration. जिनको टेलीस्कोप याद है क्लास 12th में से, जिनको क्लास 12th का टेलीस्कोप लास्ट टॉपिक रे ऑप्टिक्स का याद है, रे डायग्राम वाला, टेलीस्कोप की लिमिटेशन होती थी एक, उसमें बोलते थे chromatic aberration. Different rays of colors of light cannot converge at the same point.
because every lens will cause the dispersion of light. तो हर ray of light कहीं दूर जाए, थोड़े different points पे focus होगा. याद है? ये word फिर सुना होगा. तो आंसर है इसका chromatic aberration. लास्ट में आता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है इसका, एनडीए में तो आया हुआ ये क्वेश्चन, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, लिमिटेशन ऑफ टेलीस्कोप, ये एक प्रॉब्लम है. ठीक है, तो उसको घुमा करा के आंसर वही है, आंसर वही है. Let's proceed to the next one. For a thin lens formula, जैसी नाम सुनाई दिया thin lens, आ जाओ जी, thin lens formula. What is thin lens formula? फॉर्मूले पे भी नहीं जाना है. If you remember derivation, हम कहते थे सारे पॉइंट सेम हैं, बोलते थे ना, ये all 3 points are same. That is the reason then you say lens is very thin. Understood? तो कौन कौन से points coincide करेंगे? Optical center, यानी कि center of the lens is coinciding with those points. And what is that point? Optical center of the lens. Optical center of the lens. All the distances are measured from the optical center of the lens because it is a thin lens. It is a thin lens. Yes. Good. So I hope this is also clear. Next आइए. इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. I will take some time for this. टाइम है अभी हमारे पास 3-4 मिनट. A convex lens is immersed in a liquid denser than the glass. Convex lens है तो converging lens, but not always. Not always. Outside medium will also play a role. So what he is trying to say here is, आओ देखो ध्यान से. Let us say this is the principal axis. एक बना लिया हमने principal axis. Let me say this is one convex lens. But the outside medium is having a denser medium. So N2 हो गया इसका refractive index, N1 हो गया इसका refractive index. Let me write here, this is denser. This is optically denser. Lens is rarer. Lens is rarer medium. कुछ नहीं करना, मतलब करना तो है, सोचना ज्यादा नहीं है, बस अपना rule of refraction लगाओ. क्या लगाओ? Rule of refraction. Let us say ray of incident light is here. ये बनाओ normal. क्या बना? Normal. Light is going from denser to rarer medium. Light is going from denser to rarer medium. It bends away from the normal. इधर को आने की बजाय इधर को जाए. I think आंसर यहाँ पे आ गया है. ये अब कन्वर्ज नहीं कर रहा, ये डाइवर्ज कर रहा है. दूसरे सरफेस पे करना है कर लो, वापस नहीं आने वाली लाइट, क्योंकि अब वो जाएगा रेयर टू डेंसर, फिर होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल. अल्टीमेटली इट विल डाइवर्ज. So convex lens, which is normally a converging lens, but if it is dipped in a liquid which is denser than the glass, of course now it is behaving as which lens? Diverging lens. But normal circumstances में convex lens is a converging lens. वो रे डायग्राम आपको याद होगा, ऐसे कन्वर्ज हो जाता था पूरा. Clear? So Aman, Khushi, other students, perfect. They are all clear. Lovely. Good to see that. So I think now I will be taking up the last question for today, maintaining the target of 25 questions per session. I think ये आप आंसर दे दोगे. You should be able to answer this. This is based on the concept which we just have understood. Air bubble inside the water behaves as. Air bubble पानी में आ गया. आओ थोड़ा सा पानी बना लें. मार्कर कर गया. आओ थोड़ा सा पानी बना लें. So let us say this is the water. Inside this water there is one air bubble. Of course यहाँ से फिर पानी गायब कर दो क्योंकि एयर आ गई है बीच में. तो बताओ ये लेंस कौन सा है? बात फिर वही होगी ना. आउटसाइड मीडियम अब क्या हो गया? डेंसर. बिकॉज बाहर तो यू हैव अ लिक्विड. इनसाइड मीडियम इज एयर. Air is a denser medium. Oh sorry, rarer medium. Air is a rarer medium.
If a ray of light was to fall on this surface, it will go away from the normal. It behaves as a diverging lens. Shape is convex, but it is behaving as a diverging lens. And which lens is a diverging lens? Concave lens. True, good, shabash, someone, shabash, Kushi. So air bubble inside water behaves as which kind of lens? Concave lens. It's a diverging lens. So we have done 25 fabulous questions today to cover the range of optics. There are around 65 questions which I am going to do. तो अभी काफी बचे हुए हैं approximately. तो एक दो दिन का काम बचा है. We'll have to do आराम से समझ के करना है. So my session is over for today for the online students also. Okay. Please be there. I'll complete it by most probably Friday. It will be all done. And wish you good luck for the upcoming NDA. God bless you all from Chandigarh Defence Academy. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Thank you. Welcome. Bye.